Welcome to another session of Mahiyatul Amraz Pathology in Unani Medicine. हमने पहले तफर्रुक़-ए-इत्तिसाल के असबाब पर बात की थी और ये देखा था कि इसके कौन कौन से असबाब हैं। तो तफर्रुक़-ए-इत्तिसाल तफर्रुक़-ए-इत्तिसाल के असबाब हम देख रहे थे। तो तफर्रुक़-ए-इत्तिसाल के दाखिली असबाब हमने देख लिए थे कि कौन कौन से असबाब हैं जो तफर्रुक़-ए-इत्तिसाल पैदा करते हैं दाखिली वजूहात से। कौन सी अखलात हैं, कौन से रीह हैं और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको हम जैसे बदनी हरकत हैं, इन सब को हमने देख लिया था। अब ख़ारिजी असबाब में क्या क्या चीज़ें हैं हम उनको देख लेंगे। तो ख़ारिजी चीज़ों में जैसे सारी ही चीज़ें कवर होती हैं, बहुत क्रॉस ऑब्वियस एग्जांपल से लेके जो पॉसिबिलिटीज़ हैं तो उसे कवर करने की कोशिश की गई है। जिसमें पहली चीज़ है किसी चीज़ से तनाव या खिंचाव पैदा होने से या मसलन रस्सी वगैरह से किसी उज़्व को बांध कर खींचने से या किसी वज़नी चीज़ के बोझ से तफर्रुक़ पैदा हो जाए। तो हम जानते हैं कि किसी भी तरह का खिंचाव या तनाव एक्सटर्नली कहीं से पैदा होता है तो फिज़िकल प्रॉब्लम्स की वजह से कोई ऑर्गन कहीं पर दब गया, खिंच गया और रस्सी में कोई हिस्सा हमारा फंस गया, किसी वजह से जो है वो किसी पेशेंट के साथ ऐसे सूरत हाल पैदा हो जाए तो उसकी वजह से तफर्रुक़-ए-इत्तिसाल वाक़ई हो सकता है। उसमें एक मिसाल ये है कि वज़नी चीज़ के उठाने से, वज़नी चीज़ के बोझ के उठाने से मिसाल के तौर पर शोल्डर डिसलोकेशन कुछ लोगों में कॉमनली होता है। तो आप यहाँ मिसाल देख सकते हैं कि शोल्डर डिसलोकेशन हो गया है और इसकी वजह जो है वो ये है कि किसी वज़नी चीज़ को उठाया गया। और ऐसे लोग जिनमें शोल्डर डिसलोकेशन होता है रिकरेंस कॉमन है, बार बार हो जाना ये मुमकिन होता है। दूसरी वजह ये हो सकती है कि किसी शार्प चीज़ से, धारदार चीज़ से कट जाना, ये एक्सटर्नल कॉज हो सकता है। धारदार चीज़ से कट जाना जैसे कोई छुरी से या किसी नाइफ़ से कोई काम करते वक्त जो है वो बजाय इसके कि हम जिस चीज़ को काटना चाह रहे हैं उस पर पड़े, वो गलती से अगर हाथ पर लग जाए तो उससे भी कटना पॉसिबल होता है। जैसे जराहत हमने पढ़ा था कि अज़लात में ये चीज़ होती है कि अज़ला में लहम में जो है वो जराहत वाक़ई हो जाती है। वो जराहत वो तफर्रुक़-ए-इत्तिसाल है जो साफ़ हो, ताज़ा हो और जिसमें पीप न पड़ी हो तो वो जराहत कहलाती है। ठीक है। और हज़ हमने पढ़ा था, अगर आप रिकॉल कर पाएँ, हज़ किसे कहते हैं? तो हज़ कहते हैं वो तफर्रुक़-ए-इत्तिसाल जो अर्ज़ में वाक़ई होता है। अर्ज़ में हमने पढ़ा था कि जैसे ये मसल है और इसके अर्ज़ में तफर्रुक़-ए-इत्तिसाल वाक़ई हो जाए और ये यहाँ से कट जाए तो इसको कहा जाएगा कि ये हज़ है। तो ये जो मिसाल आप देख रहे हैं इसमें जो तफर्रुक़-ए-इत्तिसाल है वो न सिर्फ जिल्द को इन्वॉल्व कर रहा है बल्कि अज़लात तक पहुँच रहा है। और इस किस्म की मिसाल से आप समझ सकते हैं किसी शार्प ऑब्जेक्ट से अगर ऐसा तफर्रुक़-ए-इत्तिसाल वाक़ई होता है तो उसे ख़ारिजी सबब में से एक सबब समझा जा सकता है। तीसरी चीज़ है कि किसी जलाने वाली चीज़ से, मसलन आग से कोई इंजरी हो जाए, हर्क़ कहते हैं बर्न इंजरी को, तो हर्क़ हो जाए, बर्न इंजरी हो जाए, जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर इस केस में कई जगह जल जाने से और बर्न हो जाने से बर्न इंजरी नज़र आ रही है और स्किन जो है वहाँ से हटी हुई है। तो स्किन का वहाँ से हट जाना, एक तफर्रुक़ हो जाना, कंटिन्यूटी का लॉस होना है, तफर्रुक़-ए-इत्तिसाल की एक किस्म है। तो ये भी एक कॉज हो सकता है ख़ारिजी असबाब में। कभी कभी ये हो जाता है कि पत्थर की तरह कुचलने वाली कोई चीज़ हो जिससे कोई चीज़ जिससे कोई हिस्सा कुचल जाए, है ना, पत्थर जैसी कोई चीज़ हो जो कुचलने वाली हो या कोई स्टोनी या कोई भी ऐसी चीज़ हो
جیسے کسی گاڑی کے نیچے کوئی حصہ آ جائے بدن کا، تو ایسی صورت میں جو تفرق ہوتا ہے جسے ہم رز کہیں گے، شدخ کہیں گے یا صدع کہیں گے، یہ ساری اقسام تفرق اتصال میں گزر چکی ہیں کہ رز کسے کہتے ہیں اور شدق کسے کہتے ہیں، صدع کسے کہتے ہیں۔ تو اعضاء میں خاص طور سے عضلات وغیرہ میں، لحم یا عضلات میں جو اس طرح کے ہوتے ہیں جو گہرائی میں زیادہ ہوں، جو کسی حصے کو مقدار کے اعتبار سے تفرق اتصال اس میں زیادہ پایا جائے، تو وہ سب الگ الگ اقسام ہم نے بیان کیا ہے۔ تو اس طرح کی جو تفرق اتصال ہوتے ہیں وہ کچلنے والی چیز کی وجہ سے پیدا ہو سکتے ہیں۔ لیسریٹڈ وونڈس بھی ڈیولپ ہو جاتے ہیں ایسی صورتوں میں، تو یہ ساری چیزیں اس میں پاسبل ہیں۔ اور کبھی کبھی اسباب ایسے ہوتے ہیں، نیچر آف سبب کے بارے میں دیکھیے آپ، مختلف قسم کے اسباب کاتبہ نے احاطہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو کبھی کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جو پوائنٹڈ آبجیکٹ ہے، کوئی تیر کی طرح چبھنے والی ہو اور اس سے کوئی سوراخ ہو جائے نا، چھید ہو جانا، بصق کہتے ہیں چھید ہونا۔ ہم نے اسے پڑھا تھا بصق کو شرائین اور اوردہ یعنی عروق دمویہ کے تفرق اتصال میں، وہاں بھی بصق ہو جاتا ہے، عروق کے دہانے منہ کھل جاتے ہیں، لیکن بصق جو ہے وہ اور بھی جگہ پر استعمال ہوتا ہے، جہاں پر بھی سوراخ ہو جائے اس کو بصق کہتے ہیں۔ تو کسی بھی قسم کا تفرق اتصال کہیں اور بصق کی طرح کا ہوگا، چھید ہو جانا یا چبھ جانے کی وجہ سے ہو، اس کو بصق کہیں گے۔ ایون شرائین میں بھی جو بصق ہوتا ہے، جو نیڈل پرک کی وجہ سے ہوتا ہے، اس کو بھی ہم بصق کہیں گے۔ تو اس طرح کے پوائنٹڈ آبجیکٹس جو ہوتے ہیں، وہ پوائنٹڈ آبجیکٹس جو ہیں وہ ایسے تفرق اتصال کے اسباب ہیں اور اسے اس میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ پھر ایک کاز یہ بتایا گیا کہ کسی حیوان کے ڈنک مارنے کی وجہ سے، زہریلے جانور کی وجہ سے جیسے بچھو وغیرہ، یا کسی کے دانت کاٹنے سے، مثلا سانپ یا کتے کے کاٹنے کی وجہ سے، یا اور کسی اینیمل کے کاٹنے کی وجہ سے جو تفرق اتصال واقع ہو جاتا ہے وہ یہاں پر ویزیبل ہے۔ تو اس طرح کا جو تفرق اتصال ہوتا ہے، خاص طور سے ڈاگ بائٹس کامنلی پیشنٹس آتے ہیں، دیکھا جاتے ہیں، تو وہ بہت سیویئر بھی ہو جاتا ہے، کبھی کبھی بہت ڈیپ ہوتا ہے اور مسلس کو انوالو کر لیتا ہے، کئی ویسلس بھی اس میں انجر ہو جاتی ہیں۔ تو ایسے جو یہ بھی ایک کازز ہے۔ جب بھی تفرق کا کوئی پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے تو آپ کو سوچنا چاہیے کہ اس کا کاز کیا ہوگا اور اکارڈنگلی اس کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے۔ تو تفرق اتصال کے داخلی اسباب بھی ہو گئے اور خارجی بھی دیکھ لیے۔ تو ایک جو جنرل ذہن میں باتیں ہوتی ہیں کہ تفرق اتصال کا مطلب ہوتا ہے کوئی باہری خارجی چیز سے کسی قسم کا تفرق ہو جائے، فریکچر ہو جائے، کوئی چیز کٹ جائے، جل جائے، لیکن واقعہ یہ ہے کہ ہم نے دیکھا کہ داخلی اسباب بھی اچھے خاصے ہیں اور اس کئی خلطیں ہیں جو تفرق اتصال کا سبب بنتی ہیں۔ تو تفرق اتصال صرف باہری نہیں ہوتا اور صرف یہ گراس فریکچرز وغیرہ ہی تفرق اتصال میں نہیں ہے، بلکہ تفرق کئی قسم کا ہو سکتا ہے، اور جیسا نیچر ہوگا، کاز کا جیسا نیچر ہوگا، اکارڈنگلی اسی اعتبار سے آپ کو اس کا علاج کے بارے میں سوچنا ہے، اس کا اصول علاج طے کرنا ہے۔ اگر خلط ممدد ہے، خلط ریحی ہے، ریح ممدد ہے، تو آپ کو علاج اسی طرح کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ ریح ممدد ہے جو تفرق کا سبب بن رہی ہے اور آپ خلط ممدد کا علاج کر رہے ہیں، یا خلط نافذ ہے اور آپ جو ہے وہ ریح نافذ کا علاج کر رہے ہیں۔ تو یہ اسباب کے اعتبار سے تفرق کا سبب کیا ہے، اسی سبب کا ازالہ ہو، یہ ضروری ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اسباب کو جانیں۔ So we have seen earlier the internal causes of asbab or causes of Tafarruq-i-Ittisal. So causes of Tafarruq-i-Ittisal we have seen. Internal causes we have seen. Now we will see the external causes. What are the external causes of Tafarruq-i-Ittisal? So first cause is mentioned here, stretching or pulling by
any object like rope or any heavy object, pulling any heavy object such as heavy weight. So it may lead because of stretching moment, because of pulling moment. Tafarruq-i-Ittisal may happen in different situations. You can think over it. For example, shoulder dislocation is an example of Tafarruq-i-Ittisal, where dislocation happens. The ittisal is discontinued just because of lifting heavy objects. So in cases of shoulder dislocation, even recurrence is common. If any person is having this common issue, he or she may not lift heavy objects, heavy weights, because there is risk of shoulder dislocation recurrently. So it is one of the cause. Another cause is injury by sharp objects or weapons such as jarahat or haz. You might be remembering this figure we have discussed in explanation of types of Tafarruq-i-Ittisal. Could you remember where it is mentioned? We have seen it with the name of jarahat. What is jarahat? Jarahat is a type of injury which is fresh and without any putrefaction in it. So such type of Tafarruq-i-Ittisal may be caused by any sharp objects. Similarly, haz is an example of Tafarruq-i-Ittisal, where for example, this is muscle. In this muscle, any kind of Tafarruq-i-Ittisal which happens in the transverse direction, so that is called as haz. And this type of Tafarruq-i-Ittisal is the reason is caused by any sharp object or any injury with sharp weapons. Burn by any source like fire, or it may happen by any hot objects, or it may be caused by electric burn is also, thermal burn is also common, electric burn is also common. So there are different sources of burning. So burn may occur by any source like fire, maybe due to fire. So it is called as harq. The Unani term is harq. Harq means burn injury. So you can see the visible loss of continuity in the skin, visible Tafarruq-i-Ittisal in the skin. So this is a cause of an external cause of Tafarruq-i-Ittisal. And then another example is Tafarruq-i-Ittisal caused by any crushing objects, which crushes like a stone, crushing by a stone, crushing by any vehicle. So it may lead to different types of Tafarruq-i-Ittisal, such as rab or shadkh or sad'a. We have seen earlier, these are different types of Tafarruq-i-Ittisal caused by crushing objects. And we have seen these different types according to the extension of Tafarruq-i-Ittisal, according to their transverse and longitudinal direction. So you can recall where is the rad and where is the shadkh and where is sada. So accordingly you can understand. So crushing objects may cause such type of Tafarruq-i-Ittisal. And some causes are like piercing by any sharp object, any sharp but pointed object. So basq we have seen, basq. So here I want to mention that it is important to understand, to remember the Unani pathology in the Arabic script, to remember the Unani terms in the Arabic script. That's why I used to discuss all these topics in bilingual manner, so that you can
be well versed with the Arabic terminologies. They are in the Arabic scripture. That is very essential, because writing the Arabic terminologies into any other language is a difficult task, and there are different schools of thought. Some write bas as bas, and some people write it as bus like this. So there are different schools of thoughts, and if people are listening from various places, so there are different phonation also. And in India, the word tha is mentioned as s, but in Arabic countries and in many Eastern countries, it is written like this. So there are differences. So because of these differences, it is very important to note and to remember to be well versed with the Arabic script of the terminologies, so that if anyone write bus like this, anything may be there just for the understanding, but the original term should be remembered. So what is bus? Bus is actually piercing by sharp object. You can see like it is a representing image. So you can see the pointed injury, pointed Tafarruq-i-Ittisal, which is basq, and it may happen in we have seen basq in Tafarruq-i-Ittisal of uruq-i-dambiya, blood vessels. So in that case, the basq happens in the arteries or veins because of needle injury or because of any imtila. It may happens, the mouth opens, the term is used is mouth of the blood vessels are opened. So that is actually basq, and basq is caused by piercing by sharp and pointed object. So needle injury may be there, and certain other sharp pointed objects may cause basq. So basq is not necessarily for uruq-i-dambiya or blood vessels, it may happen anywhere. And some other example, some other causes, I think it is the last cause mentioned here. Sting or bite of any animal, for example snake bite, dog bite, even scorpion sting, or sting of any other animal which is dangerous to us. So that may lead to Tafarruq-i-Ittisal of the skin and even the muscles. So dog bite is a very common issue, and it may lead to severe kind of injuries, severe kind of Tafarruq-i-Ittisal. It is not limited to only the skin, but also it may involve the muscles and even the blood vessels. So you have to understand that there are different types of Tafarruq-i-Ittisal, among which type of Tafarruq-i-Ittisal may cause which kind of which cause may be responsible for which kind of Tafarruq-i-Ittisal. So it is important to understand based on the clinical presentation. You have to identify what may be the Tafarruq cause. Based on the history, you may locate the cause of Tafarruq-i-Ittisal, and based on the situation, based on the sign and symptoms, you may consider the cause of the Tafarruq-i-Ittisal. And it is important to identify the cause, so that accordingly the treatment can be applied and patient can be treated in a proper way. For example, if a case of Tafarruq-i-Ittisal is caused by Khilti rihi, imtilai rihi, then treatment of imtilai khilti is not suitable. Similarly, if the cause is due to imtilai rihi nafiz or imtilai rihi mumaddid, you could not treat that patient without addressing the
cause of re without starting the treatment which is responsible for removal of re from the particular pathological part. So that is very essential to identify the cause, and the therapeutic principles should be applied accordingly without fail. And without this type of consideration, without locating the cause, actual disease could not be treated. So, and one important thing I want to mention that naturally a student think that Tafarruq-i-Ittisal is the causes of Tafarruq-i-Ittisal may be external, and these causes are very known causes, and anyone can understand, anyone can remember these causes. But you have seen that the major causes of Tafarruq-i-Ittisal are internal, and most of the causes of Tafarruq-i-Ittisal are internal. It also hints us that Tafarruq-i-Ittisal is not only fractures or cutting skin or piercing or anything cutting, but Tafarruq-i-Ittisal may happen in the internal structures. Worm is a kind of Tafarruq-i-Ittisal obviously, but other kinds of Tafarruq-i-Ittisal, such as we have seen leprosy is also cause of Tafarruq-i-Ittisal. And I want to state here that certain situations like cancer is also responsible for Tafarruq-i-Ittisal or fractures of bone. So sometimes patient came to physician with fractures and came to the surgeon for orthopedician for the treatment of surgeons. At that time it is important to take the history, to do the investigations whether he is suffering from any kind of disease which is internally responsible for fracture, or it is caused by external factors. Sometimes patient fall down and the fracture happens, and it is very upset situation. Mere falling to the ground may lead to such fractures, but it is maybe because of some internal issues, some internal weaknesses, some internal akhlaq that may lead to such disorders. Vitamin D deficiency is very important cause of weakness of bone. So such consideration is important for diagnosis of Tafarruq-i-Ittisal. So please remember the internal causes of Tafarruq-i-Ittisal and what are the external causes of Tafarruq-i-Ittisal. And next we will discuss the another session on causes of Awram. What are the different types of Awram we have seen earlier. We will see what are the different causes of different types of Awram. Thank you. इससे पहले हमने तफर्रुक़-ए-इत्तिसाल के असबाब देखे थे। उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अलग से मेंशन्ड है किताबों में और बहुत अहम है जिसे हमें जानना चाहिए, तफर्रुक़-ए-इत्तिसाल के ज़ैल ही में आती है, वो है क़रहा के असबाब। तो क़रहा के असबाब क्या हैं और क़रहा किस किस तरीक़ों से हो सकता है, वो हम यहाँ पर मेंशन करेंगे। तो क़रहा हो सकता है कि कभी वर्म जो है वो पक जाता है और पक कर फूट जाता है, तो उससे भी क़रहा वाक़ई होता है। वर्म के बारे में आपको मालूम है, वर्म का पकना से मुराद ये है कि वर्म के अंदर सप्यूरेशन हो जाए और फिर उसका इंफिजार हो जाए, फूट जाए, तो उससे भी क़रहा बन जाता है, वूंड बन जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि जराहत जो कि क़रहा से मुख्तलिफ़ होती है। जराहत वो होती है जिसमें पीप नहीं होती, और जब जराहत में पीप पड़ जाती है तो उसे क़रहा कहते हैं। तो जराहत के असबाब जो हैं वो जराहत के असबाब हमने बयान किए हैं तफर्रुक़-ए-इत्तिसाल में, लेकिन जब इसमें पीप पड़ जाती है तो ये क़रहा बन जाता है। तो ये एक वजह हो सकती है। तीसरा ये है कि बसूर में ताकुल हो जाए। बसूरात भी औराम छोटे औराम कहलाते हैं, और बसूरात में कभी कभी ताकुल मतलब इरोजन हो जाता है, एक तरह से खिलते अकाल वहाँ पर आ जाती है जो आधा को खाने लगती है, तो उससे भी वहाँ पर एक तरह की अफूनत वाक़ई होती है और क़रहा बन जाता है।
जो करहा बन जाता है, मसलन वरम में भी देखिए और बसूर में भी देखिए, जब कंटिन्यूटी जो ऊपर की स्किन है वो निकल आए और ज़ख़म की क्या सूरत हाल पैदा हो जाए तो उसे हम करहा कहेंगे। तो बसूर में भी ये वाक़या होता है कि ताकुल हो जाए और आप देख रहे हैं कि पेशेंट के जो है वो एक तरह से पीप उस ज़ख़्म में पड़ गई है, और इसको हम करहा कहेंगे। So Qarha is also a kind of Tafarruq-i-Ittisal. So we'll see what are the Asbab of Qarha. One sabab, one cause is rupture of mature worm, worm or a swelling, and for example a boil may mature and may rupture. So rupture may lead to the removal of the surface, and that leads to formation of a wound. So that wound is called as Qarha. Another cause is suppuration in Jarahat. So the difference between Jarahat and Qarha is only of suppuration. So if suppuration happens in the Jarahat, that is called as Qarha. So you can see the suppurated material is visible in this case. Another important cause is Ta'akul in Busur. Ta'akul is a term for erosion. So if erosion happens or a kind of suppuration happens in small auram or basur, so such kind of wound is developed. So this is another cause of Qarha or wound. So these are now complete description of Tafarruq-i-Ittisal.